You can see here the title of the chapter: Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy. First of all, we will see here introduction. In the previous chapter, we have studied Indian Constitution, preamble, and important pillars as well as the specific characteristics. So friend, in unit number 8, we have already learned about the Indian Constitution, preamble, and important pillars of preamble, as well as we have also discussed about the features or characteristics of our constitution. In this chapter, we will study about other important characteristics of our constitution, that is fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. So friend, in this chapter we will discuss about fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy, which are characteristics of our constitution. Human rights. Human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. So friends, human rights are those rights which are not given to person for their basic existence, but human rights are given to the people for overall development in which society they can help and they can construct a proper environment for development. In every democratic country, the citizens are conferred with basic rights. In every democratic country, every citizen has a basic rights. A person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well. यानी कि किसी भी पर्सन को उनकी कास्ट के आधार पे या किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं रख सकते। उसको उनका जो बेसिक राइट्स है वो हमें देना पड़ता है और वो इसलिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो नेशन है, उनको ये श्योरिटी उनको दी है। द पर्सन बाय हिज birth owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights। यानी कि जो पर्सन का जन्म होता है तो वो उनके साथ ही ये जो बेसिक राइट्स है वो साथ ही उनको मिलते हैं, तो उसको हम ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. So friend, United Nations General Assembly has declared 10th of December 1948 for Human Rights, and every 10th December of the year is celebrated as Human Rights Day. From the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India, and thereby these rights are protected in a dignified way। यानी कि ह्यूमन राइट्स का एक ग्लोबल अनाउंसमेंट था जिसके कारण हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ह्यूमन राइट्स जो है तो उसको एक बेसिक और एक बहुत ही ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट उनको दिया गया है, और जिसके कारण हमारी जो इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स है तो वो राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। Thus, those human rights which are included by Constitution of India
are known as fundamental rights। और इस तरह से जो भी ह्यूमन राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है तो उसको हम फंडामेंटल राइट्स के नेम से जानते हैं। These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way। यानी कि ये जो ह्यूमन राइट्स है तो वो ह्यूमन को यानी कि जो भी पर्सन है तो उसको एक अपनी जो लाइफ है वो डिग्निफाइड वे से वो जी सके, इसके लिए उसको एक जो गारंटी है वो गारंटी उनको देते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स इज लाइक फूड, clothes, shelter, education, and health should be received in a dignified and respectable way। यानी कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ तो वो उनको डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेबल वे से यानी कि उसको जितनी ज़रूर है उसको उतनी उसको ये सब चीज़ यानी कि प्राइमरी नेसेसरी की जो थिंग है तो वो उसको मिल सके। Democratic country allows its citizens to enjoy equal rights for multifaceted development। That means friends, every democratic country allows their citizens to enjoy equal rights for the development। The state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system। यानी कि जो स्टेट है तो वो स्टेट को ये स्टेट वो गारंटी देते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे उनके जो ह्यूमन राइट्स है जो उनके फंडामेंटल राइट्स है तो उसको एक प्रोटेक्ट करने वाला जो एनवायरनमेंट है तो वो एनवायरनमेंट स्टेट देने की गारंटी देता है कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक आइडेंटिटी जिसको हम मानते हैं। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर फंडामेंटल राइट्स। The nation's stability, protection of citizens' freedom, and democracy are protected through fundamental rights. So, Indian citizens' freedom and democracy are protected due to fundamental rights. Now, friend, we will see here which are fundamental rights which has given to Indian citizens. So, here given first number right to equality. Second number, right to freedom. Third number, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational rights. And last, right to constitutional remedies. So friend, these are our fundamental rights of Indian citizens. Now we will see in detail about these rights. So first number, right to equality. Equality before law and equal protection of law are included in right to equality। यानी कि लॉ से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए और साथ में जो लॉ के जरिए जो प्रोटेक्शन भी सबका इक्वल होना चाहिए तो ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। दिस इज fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens। So that means friends, fundamental rights is considered as a foundation of other rights because these rights privileges of guaranteed to Indian citizens। यानी कि ये दूसरे भी जो इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स है प्रिविलेजेस है तो उसकी एक गारंटी इंडियन सिटीजन्स को ये देते हैं। It is one of the chief guarantees of the Constitution of India। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or her right to equality। Means, it is considered as a chief guarantee to the Indian people ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ये राइट टू इक्वालिटी जो है तो ये एक मेजर गारंटी इंडियन पीपल को देता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें मिलता है और इसके ज़रिए भी
इंडियन सिटीजन जो है तो उनको अगर राइट टू इक्वालिटी उनको नहीं मिलती है या फिर उसको एंजॉय करने नहीं देते हैं कोई, तो उसके लिए कोर्ट में भी वो लोग जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शैल बी शोन favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. So, according to this right, no person can be shown their favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. यानी कि ये जो राइट है तो राइट के मुताबिक कोई भी पर्सन अपनी जो फेवरेटिज्म है वो चाहे कलर के बेस पे हो, चाहे कास्ट के बेस पे या लैंग्वेज या क्रीड, किसी के आधार पे वो फेवरेटिज्म जो है वो नहीं कर सकते हैं। लॉ इज इक्वल टू ऑल। For example, from the peon to the prime minister, if they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law। यानी कि जो लॉ है तो वो सबके लिए इक्वल है, वो चाहे पियून हो या प्राइम मिनिस्टर। यानी कि पियून से लेकर प्राइम मिनिस्टर दोनों के लिए जो लॉ है तो वो इक्वल ही है। और जब भी उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस होता है या फिर कोई भी क्राइम होता है तो उसको इक्वल पर्सन की तरह यानी कि एक कॉमन पर्सन की तरह ही उनको जो जनरल कोर्ट है जनरल कोर्ट में उसको लाया जाता है, यानी कि वो जनरल कोर्ट में भी वो बंदित है। हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेजेस। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को उनमें कुछ प्रिविलेजेस है, यानी कि कुछ स्पेशल राइट्स है। In each and every circumstances, the law should prevail equally. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class। यानी कि कोई भी संजोग हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, तो उसमें जो लॉ है तो वो सबके लिए इक्वल ही होता है और किसी भी प्रकार का हम डिस्क्रिमिनेशन या फेवरेटिज्म जो है किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक क्लास के लिए हम नहीं दिखा सकते। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसेमिनेटेड। यानी कि हर एक जो लॉ है तो वो हर एक के लिए इक्वल बना हुआ है। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटन्स to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing ghats। For all the people, there is a equal admittance to at public places as like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, roads and lakes as well as public wells and bathing ghats। यानी कि जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, देन पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस है, तो वहाँ पे सब ये जो एडमिनिस्ट्रेंस है वो एडमिनिस्ट्रेंस यानी कि उसमें जो एंट्री दी जाती है तो सबको इक्वली एंट्री दी जाती है। यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ध्यान में रखकर उसको एंट्री नहीं दी जा सकती। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled castes or scheduled tribes। इसके बावजूद जो भी स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके पास स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए और वो भी वीमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए वो एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, तो उनके लिए वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जिनके जरिए वीमेन और चिल्ड्रन दोनों का डेवलपमेंट जो है तो सोशली और इकोनॉमिकली हो सके। No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent, or place of birth in respect of any government services and higher education under the state। So that means friends, no citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent, or place of birth in respect of any government service and higher education अंडर द स्टेट। यानी कि कोई भी सिटीजन है वो सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके कास्ट के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे, उसके क्रीड के आधार पे या उनके जो बर्थ प्लेस है उसके आधार पे।
यानी कि जो भी पब्लिक सर्विसेज है तो वहाँ पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है तो वो हर एक सिटीजन के लिए दी जाती है। However, the state is given permission to make decisions regarding required qualifications for said services. इसके बावजूद जो भी स्टेट गवर्नमेंट है तो वो कुछ जो परमिशन है वो परमिशन क्वालिफिकेशन के आधार पे वो दे सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे वो जो डिसीजन है या परमिशन जो है तो वो दे सकते हैं।